Hello dear students, so this question is asked in JEE Advanced 2025. Question is from rotational dynamics question है ये and using the simple harmonic motion concept. The center of a disk of radius r and mass m is attached to a spring of a spring constant k and ये एक डिस्क है तो डिस्क छोटा सा डिस्क यहाँ दिया हुआ है रेडियस जो इस डिस्क का है वो स्मॉलर देन द कैपिटल आर दिस इंटायर आई मीन जो एक रिंग दिया हुआ है राइट नाउ इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द रिंग बोथ द रिंग एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन ये वर्टिकल प्लेन में डिस्क कैन ओनली रोल अलोंग द साइड along the inside periphery of the ring without slipping तो slip नहीं कर सकता यहाँ पे ये बस इसको रोल कर सकता है इसके ऊपर so disk is rolling on this ring right the spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring the followed the Hooke's law अब ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच या इलोंगेशन जो भी हो सकता है कंप्रेशन होगा तो वो अलोंग दिस पेरिफेरी होगा राइट और ये हुक्स लॉ फॉलो करता है इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट द बॉटम ऑफ द रिंग assuming a small displacement of the disk the time period oscillation का अगर दिया हुआ है 2 पाई बाय ओमेगा तो ओमेगा का इन्होंने एक्सप्रेशन पूछा है सो वेरी नाइस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे था समझ लेना यहाँ पे अगर ये डिस्क इस तरीके से है एंड दिस डिस्क इज एक्चुअली rolling on this ring let's say like this making angle theta एक सेंटर से पास कर रहा है इस तरीके से और ये एक इसका मीन पोजीशन ले लेते हैं मीन पोजीशन के साथ ये एंगल जो है लेट्स से थीटा क्रिएट कर रहा है ठीक है सो अगर ये मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट अगर x है दिस लेंथ इज x लेट्स से सो you can say that the kx is the spring force जो इधर की तरफ काम करेगा इसके ऊपर ना another force जो इसके ऊपर काम कर रहा है वो है mg नीचे की तरफ राइट एंड उसके बाद ये जो एंगल होगा ये डायरेक्शन में तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा राइट नाउ द फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा बिकॉज रोलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डिस्क और सरफेस के बीच में तो होगा फ्रिक्शन फोर्स F फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है सो नाउ इफ इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A तो अगर प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा प्योर रोलिंग में क्या होता है कि इफ द एनी ऑब्जेक्ट लेट्स से स्फीयर और डिस्क इज मूविंग विद एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर A है और इट इज आल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन लाइक इस तरह से ये अल्फा से रोटेट कर रहा है सो A is equals to then इसका आता है A is equals to R into alpha that's the acceleration and the angular acceleration का relation ये होता है जो ठीक है now can we also say that कि फोर्स जो इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है that is causing this acceleration right or not so फोर्स इक्वेशन हम लिखेंगे तो kx एंड फिर मास mg है तो mg का कंपोनेंट mg sin थीटा इज वर्किंग तो mg sin थीटा यू कैन राइट हियर सो mg sin थीटा एंड देन उसके बाद जो है फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो माइनस फ्रिक्शन फोर्स कर सकते हो एंड दैट इज इक्वल्स टू मास दैट इनटू दिस एक्सेलरेशन a दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन The another equation जो तुम लिख सकते हो यहाँ पे वो है फ्रिक्शन फोर्स जो है ये रोटेट जो कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स F so this friction force F can be written as I into alpha that divided by R right where alpha is basically the acceleration angular acceleration above the center of mass ठीक है तो ये हम लोगों के पास I into alpha by R ये हो जाएगा now we can also say that if alpha dash is the acceleration about the center about this then that acceleration A can also be equated as r minus small r into alpha dash अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये इस सेंटर ऑफ मास आई मीन दिस पोजीशन के अबाउट है यानी कि सेंटर के अबाउट है एंगुलर एक्सेलरेशन जबकि ये वाला जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दिस इज about the center of mass right तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना now we can
पुट द वैल्यू x का जो वैल्यू होगा, दिस x वैल्यू इज बेसिकली equals to r minus r this into theta, applying the radian concept कि theta is equals to क्या होता है, length of arc by radius होता है, तो x is equals to r minus small r that into theta. So putting all these values in this equation, you are getting k times of r minus r this into theta plus, now sin theta, because for the small angle the theta sin theta can be equated to theta, so you can just write mg into theta, right? Minus friction force, the friction force can be written as I times of alpha that divided by small r, right? And that is equal to how much? Mass into acceleration. So acceleration can also be written as like m is equals to m into and r minus small r that into alpha dash. अब थोड़ा ये समझना है कि this acceleration is equal to small r into alpha, and this acceleration is also equals to r minus r into alpha dash, right? तो अब हम लोग को यहाँ पे जो है इस अल्फा को I mean ये जो अल्फा है, this alpha has to be converted in terms of this alpha dash. Okay, so the next equation will be equal to how much? Can we say this is k times of r minus r plus mg, और थीटा को हम लोग बिल्कुल आउटसाइड लिख लेते हैं, that is equal to how much? I times of that alpha by r plus m times of r minus r into alpha dash. Now moment of inertia जो है, this moment of inertia has to be about this center of mass, right? The center of mass is moment of inertia. एक डिस्क का moment of inertia जो होता है वो होता है half mr square, so you can use half m into r square, and जो alpha है, this is the angular acceleration about the center of mass of the disk, right or not? ये alpha जो है, this is the angular acceleration about the center of mass of the disk. So इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ अल्फा को, चूंकि a इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था r इंटू अल्फा, and a was also equals to r minus r into alpha dash. So the alpha can be equal to r minus r into alpha dash that divided by small r, right? ये हो जाएगा. So and that plus m times of r minus r into alpha dash. From here we can say that ये आपको वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा m into r by 2 and this into r minus small r plus m times of r minus r. So ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है. आई का वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर यूज करना है हम लोगों को, एंड जो अल्फा का जो वैल्यू होगा ना, अल्फा इज इक्वल्स हो जाएगा आर माइनस आर, ये पहले से ही आर था यहाँ पे, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट एम टाइम्स ऑफ आर माइनस आर बाई 2 ये हो जाएगा, प्लस एम टाइम्स ऑफ आर माइनस आर दिस इंटायर क्वांटिटी इनटू अल्फा डैश. नाउ राइट हैंड साइड जो है ओवरऑल इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? m times of r minus r ये आ जाएगा, and that whole thing into 3/2, right? and this into alpha dash, और ये इधर जो आ जाएगा वो जाएगा k times of r minus r plus mg this entire quantity into theta, this is equals to 3/2 times of m times of r minus r into alpha dash. अब एक चीज थोड़ा समझना है यहाँ पे कि टाइम पीरियड जो स्मॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्मॉल ऑसिलेशन के लिए जो होता है वो होता है 2 √, दैट थीटा बाय अल्फा होता है, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड जो अल्फा जो होता है वो अल्फा हम लोग यूज करते हैं फॉर दिस एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट दिस आई मीन दिस सेंटर, एंड दैट्स व्हाई ये अल्फा हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये अल्फा डैश यूज करेंगे. तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था यहाँ पे,
तो थीटा अल्फा डैश हम लोग को यूज करना है यहाँ पे. सो कैन वी से दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू so 2 pi by omega. So from here we can say omega is equals to alpha dash by theta. So that is also equals to alpha dash by theta करोगे, I mean this omega alpha dash by theta करोगे तो ये तुमको आ जाएगा 2/3 and k times of r minus r को डिवाइड करोगे m टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ k by m प्लस g by and this is r minus r, right? So this is the value. So omega is equal to 2/3 times of k by m plus g by r minus r. This is the answer. So for the answer should be I mean 2/3 times of k by m g by r minus r. The first answer is correct. So very nice question but बहुत लेंदी था. ठीक है, thank you.